पार्ट 4 का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो सिर्फ ये है कि इसके अंदर ब्रेक नहीं है। ऑल द 10 क्वेश्चंस विल बी प्लेड इन सिंगल टेप। इसमें टेप रुकेगी नहीं बीच में। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इनमें टेप कंटिन्यूस कभी भी नहीं चलती। कम से कम वो उसको 2 समय तक सीन करते हैं। डिपेंड्स अपॉन कितने क्वेश्चंस। इसके अंदर अगर आपका एक आंसर स्किप हो जाता है कोई बात नहीं, आपको इसमें जंप लेना आना चाहिए, या आप बाकी पोर्शंस में भी कर सकते हैं, मगर पार्ट 4 में स्पेशली। आपको इसके सब हेडर्स नजर आ रहे हैं? कितने हैं? ओके, क्या क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन, रीजंस हिस्ट्री, फॉर। डिस्क्रिप्शन एंड रीजंस फॉर एक्सटेंशन। ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप इस वाले पोर्शन में कहीं पर भी लॉस्ट हो जाते हैं इन द टेप, आपका काम यह है कि आप एटलीस्ट इस वाले टैग के ऊपर आ जाएं और मेनली इस बुलेट को फोकस कर लें। छोड़ दें टेप को, चलने दें। आप यहाँ पे फोकस करें क्योंकि जो इस पेज पे लिखा है वो उन्होंने बोलना जरूर है। हाँ, ऑब्वियसली पैराफ्रेज फॉर्म में बोलेंगे, मगर है कि आपको हिंट दे देते हैं कोई ना कोई। तो क्या होगा कि आपके ये नीचे का जो पोर्शन है सेफ हो जाएगा। ऊपर के चले 2 स्किप भी होते हैं। सेम गोज हियर, अगर आप इस पोर्शन में कहीं पे स्किप हो जाते हैं, या तो आप यहां पर जंप कर सकते हैं, 36 37 से इसको रिज्वाइन कर लें। अगर आप यहां से भी नहीं ज्वाइन हो रहा तो एटलीस्ट आप लास्ट वाले बुलेट पे आके जंप कर जाएं। तो उन्होंने यहां से आपको देने एटलीस्ट 2 नंबर यहां से आपके सिक्योर हो जाएंगे। सो जब भी आपके पेपर में सब हेडर्स अवेलेबल होते हैं एंड यू आर लॉस्ट समवेयर, इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ जंप, क्योंकि अदरवाइज आप कैच वाली गेम करते रहेंगे, टेप आगे आगे होगी, आप पीछे पीछे। दैट्स वन टिप। बाकी जो टिप है एग्जैक्टली सेम है। जब आपको फ्री टाइम मिलेगा, रीड एवरीथिंग। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आपने सारा कुछ पढ़ना है। राउंड अबाउट 60 सेकेंड्स का टाइम मिलता है ये सारा पोर्शन पढ़ने के लिए। और जब पढ़ना है तो उसके कीवर्ड्स मार्क करने हैं, बिकॉज आंसर्स आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द कीवर्ड्स। और स्टेटमेंट्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कीवर्ड्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। मैं आपके साथ 2 क्वेश्चंस करूंगा, बाकी कीवर्ड्स आपने मार्क करने हैं, फिर हम इसको प्ले करेंगे। ठीक है, पहले ये 2 मार्क कर लेते हैं। ओके जी, ऑप्शन सी जी, इसमें है द एक्सटेंशन ऑफ डोडो बर्ड। द डोडो वॉज अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड विच यूज टू इनहेबिट द आइलैंड ऑफ मॉरिशस। हिस्ट्री में क्या लिखा होगा जी? 1507 पोर्टुगीज शिप्स ट्रांसपोर्टिंग। 1507 पोर्टुगीज शिप्स, ये हमारा जनरल कीवर्ड है। और ये हमारा, इसको चलो हाईलाइट कर लेते हैं ब्लू से, ये हमारा एक्चुअली प्राइमरी कीवर्ड है। ब्लैंक से पहले और ब्लैंक के बाद हमेशा प्राइमरी कीवर्ड होता है। दैट्स द ट्रिक। तो 1507 की बात है, पोर्टुगीज शिप्स की बात है, वो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट कर रही थी। ठीक है। अब जो भी ट्रांसपोर्ट कर रही थी, जो भी उनका कह लें कि माल वगैरह था, एक्चुअली वो इसका आंसर है। ब्लैंक के बाद फौरन क्या लिखा हुआ है? क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे थे? जो भी है, स्टॉप्ड एट आइलैंड टू कलेक्ट फूड एंड वाटर। अब ये एट द आइलैंड टू कलेक्ट फूड एंड वाटर, दिस इज योर अगेन सेकेंडरी कीवर्ड। और आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो स्टॉप्ड है। तो इसके दरमियान में जो गेम है, एक्चुअली दैट इज द कीवर्ड, जो कि आपको एक सेंस क्रिएट करेगा कि ट्रांसपोर्ट कर रहे थे ये और रुके इस काम के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है बीच में। तो जब भी आपने ब्लैंक्स के कीवर्ड मार्क करने, मेक श्योर कि ब्लैंक से पहले और ब्लैंक का बाद ये प्राइमरी कीवर्ड्स कंसिडर होते हैं, बाकी इसके सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। इसी तरह अगर मैं दूसरा ले लूँ, 1638 द डच इस्टेब्लिश्ड अ डैश ऑन दी आइलैंड। अब कभी कभी आपके सिंगल वर्ड्स होते हैं जैसे आ, ऑन, ये इतनी सेंस नहीं क्रिएट करते। तो फिर आपका कीवर्ड कुछ और हो जाता है। एक्चुअली अब आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है इस्टेब्लिश्ड आ। क्या इस्टेब्लिश किया उन्होंने और कहाँ पे किया? ऑन और दी कुछ भी सेंस नहीं क्रिएट करेगा। ऑन दी आइलैंड, ये मिला के एक्चुअली आपका प्राइमरी कीवर्ड बन गया। क्योंकि कभी कभी स्टैंड अलोन वर्ड्स सेंस क्रिएट करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टिंग, स्टॉप्ड, मगर कई बार आ, एन और दी कुछ भी क्रिएट नहीं करते। तो बाकी का आपका जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा दैट इज अ सेकेंडरी कीवर्ड। 1638 की बात और यहाँ पर डच की बात है। इसका मतलब कि 2 डिफरेंट लाइक नेशनलिटीज का इसमें जिक्र है, पोर्टुगीज एंड डच। और टाइम फ्रेम भी डिफरेंट है, तो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंट होगा। हाँ जी, सारे क्वेश्चंस पढ़ लें, कीवर्ड मार्क करें। आई एम जस्ट गोइंग टू रोल द टेप एंड लेट्स सी हाउ यू डू इट। जी फ्रेंड्स, ओके। ऑलराइट, your tape is rolling.
Read all the information and when tape plays, answer all the questions. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. One of the most famous cases of extinction is that of a bird known as the dodo. In fact, there's even a saying in English, as dead as the dodo, used to refer to something which no longer exists. But for many centuries, the dodo was alive and well, although it could only be found in one place, the island of Mauritius in the Indian Ocean. It was a very large bird, about 1 metre tall, and over the centuries it had lost the ability to fly, but it survived happily under the trees that covered the island. Then, in the year 1507, the first Portuguese ships stopped at the island. The sailors were carrying spices back to Europe and found the island a convenient stopping place where they could stock up with food and water for the rest of the voyage, but they didn't settle on Mauritius. However, in 1638, the Dutch arrived and set up a colony there. These first human inhabitants of the island found the dodo birds a convenient source of meat, although not everyone liked the taste. It's hard to get an accurate description of what the dodo actually looked like. We do have some written records from sailors and a few pictures, but we don't know how reliable these are. The best-known picture is a Dutch painting in which the bird appears to be extremely fat, but this may not be accurate. An Indian painting done at the same time shows a much thinner bird. Although attempts were made to preserve the bodies of some of the birds, no complete specimen survives. In the early 17th century, 4 dried parts of a bird were known to exist. Of these, 3 have disappeared, so only one example of soft tissue from the dodo survives, a dodo head. Bones have also been found, but there's only one complete skeleton in existence. This single dodo skeleton has recently been the subject of scientific research, which suggests that many of the earlier beliefs about dodos may have been incorrect. For example, early accounts of the birds mention how slow and clumsy it was. But scientists now believe the bird's strong knee joints would have made it capable of movement which was not slow, but actually quite fast. In fact, one 17th century sailor wrote that he found the birds hard to catch. It's true that the dodo's small wings wouldn't have allowed it to leave the ground, but the scientists suggest that these were probably employed for balance while going over uneven ground. Another group of scientists carried out analysis of the dodo's skull. They found that the reports of the lack of intelligence of the dodo were not borne out by their research, which suggested the bird's brain was not small, but average in size. In fact, in relation to its body size, it was similar to that of the pigeon, which is known to be a highly intelligent bird. The researchers
also found that the structure of the bird's skull suggested that one sense which was particularly well developed was that of smell. So the dodo may also have been particularly good at locating ripe fruit and other food in the island's thick vegetation. So it looks as if the dodo was better able to survive and defend itself than was originally believed. Yet, less than 200 years after Europeans first arrived on the island, they had become extinct. So what was the reason for this? For a long time it was believed that the dodos were hunted to extinction. But scientists now believe the situation was more complicated than this. Another factor may have been the new species brought to the island by the sailors. These included dogs, which would have been a threat to the dodos, and also monkeys, which ate the fruit that was the main part of the dodo's diet. These were brought to the island deliberately. But the ships also brought another type of creature, rats, which came to land from the ships and rapidly overran the island. These upset the ecology of the island, not just the dodos, but other species too. However, they were a particular danger to the dodos because they consumed their eggs. And since each dodo only laid one at a time, this probably had a devastating effect on populations. However, we now think that probably the main cause of the bird's extinction was not the introduction of non-native species, but the introduction of agriculture. This meant that the forest that had once covered all the island and that had provided a perfect home for the dodo was cut down so that crops such as sugar could be grown. So, although the dodo had survived for thousands of years, suddenly it was gone. That is the end of part 4. All right. जो चीज़ इसकी अच्छी है वो ये है कि इसमें स्पीकर्स की जो स्पीड होती है ना वो इतनी तेज नहीं होती और इसमें एक ही स्पीकर आंसर देता है। आंसर पिक करना थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज यू आर लिसनिंग टू वन टोन वन वॉइस एंड एट द सेम टाइम स्पीड इज ओके। आंसर्स पहले कर लेते फिर जो अगर आपको इशू आया तो फिर इस पे बात कर लेंगे। नंबर 31 इज स्पाइसेस, 32nd is colony, 33rd is fat, F-A-T, 34 head, 35 movement, M-O-V-E-M-E-N-T, 36 balance, correct, 37 brain, नहीं सर स्कल नहीं आएगा, brain. Number 38 smell, नहीं सर smell singular है। 39 rats, यहाँ पे ऐसा है rats, and last one forest. Alright जी, अगर किसी क्वेश्चन में इशू है उसको दोबारा सुनना है या नहीं समझ आ रहा वो बताएं मुझे, उसको हम वहां से प्ले करके सुन लेते हैं। 35 का ठीक है। और जी एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, चलिए इसको बीच में लेकर चलते हैं। Found the dodo birds a convenient source of meat. Although attempts were made to preserve the bodies of some of the birds, no complete specimen survives. In the early 17th century, 4 dried parts of a bird were known to exist. Of these, 3 have disappeared, so only one example of soft tissue from the dodo survives, a dodo head. ठीक हो गया, 34 पे हम हैं अभी, ठीक है, soft tissue, dodo's head. Bones have also been found,
But there's only one अब 35 का पहले कीवर्ड मार्क कर लेते हैं. इट सेज recent studies of a dodo skeleton suggest the birds were capable of rapid, और मूवमेंट हमने आंसर लिखे. जहां पे मैंने टेप को पॉज किसने ऑलरेडी बोन्स का जिक्र कर दिया था. तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्केलेटन, स्केलेटन इज ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट द बोन्स. पहले इसका कीवर्ड बना लेते हैं, ठीक है. recent studies of dodo skeleton suggest, ये इसका सेकेंडरी कीवर्ड आ रहा है सारा, ठीक है. that the birds were capable of, ठीक है. और अगर हम यहां से अगर इसको लें तो यहां से इसका मेन कीवर्ड बनेगा capable of rapid. आगे हमने आंसर निकाला था, ये इसका प्राइमरी कीवर्ड है. capable मीन्स की एबिलिटी है, रैपिड मीन्स सडन, जो अचानक हो जाता है. तो स्केलेटन को स्टडी करके उनको कुछ पता चला कि बर्ड की कोई एबिलिटी थी जो कि सडन से रिलेटेड है, ठीक है. सुनते हैं इसको थोड़ा सा पीछे. complete skeleton. A dodo head. Bones have also been found, but there's only one complete skeleton in existence. This single dodo skeleton has recently been the subject of scientific research. ठीक है, सारा कीवर्ड मैच हो गया. रीसेंट सब्जेक्ट, साइंटिफिक रिसर्च, रीसेंट स्टडीज, सारा कुछ मैच हो रहा है. स्केलेटन भी आ गया. Which suggests that many of the earlier beliefs about dodos may have been incorrect. ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी. न्यूज रिसर्च ने कुछ और फाइंडिंग्स की. For example, early accounts of the birds mention how slow and clumsy it was. कौन से अकाउंट्स? प्रेजेंट के पुराने? अर्लियर अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट का वर्ड एडेड है. सो बेसिकली एज पर द कीवर्ड वी आर फोकस्ड ऑन द रिसेंट फाइंडिंग्स. तो पुराने में स्लो और क्लमजी था वो. But scientists now believe the bird's strong knee joints would have made it capable of movement which was not slow, but actually quite fast. अब इसके अंदर जो वर्ड है वो हमने मूवमेंट पिक किया. नौ वाले सारे वर्ड्स आ गए, उसने रैपिड को एक्चुअली फास्ट के साथ चेंज किया. अब उसने केपेबल के साथ आंसर पहले दिया इधर, और इसको देने के बाद फिर उसने ये वाला आंसर बाद में बोला. तो उसने एक्चुअली आपका प्राइमरी कीवर्ड दो हिस्सों में तकसीम की, ठीक है. तो केपेबल ऑफ मूवमेंट, नॉट स्लो, जो कि ऑलरेडी इसका रिवर्स फॉर्म है रैपिड का, और फिर उसने बोल दिया कि विच वॉज क्वाइट फास्ट. जी सर, ओके. बस ये कि आप अगर वकैब के साथ साथ चल रहे हैं, वकैब मैच करते रहे, तो ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स आपको हेल्प करते हैं कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन क्या है. अब क्योंकि आंसर वन वर्ड है तो हमने बस वो एक वर्ड डालना था जिससे इन्फॉर्मेशन सेंस कंप्लीट हो. जी फ्रेंड्स, एनी अदर क्वेश्चन? बाकी गुड है, ठीक है. इसको सम अप करते हैं. ओवरऑल टेक्निक इज दिस. आपका पूरा का पूरा लिसनिंग पेपर एक ही एक्चुअली मेथड पे चल रहा होता है. पहला, जब वो आपको टाइम दें, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस. जितने उसने क्या उतने पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस. यू हैव टू मार्क द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स नहीं मार्क के तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है. पेपर पे आप मार्क कर सकते हैं. अब क्योंकि सारे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड हैं, तो कंप्यूटर पे हाईलाइट की ऑप्शन अवेलेबल होती है. यू हाईलाइट इट, ठीक है, ताकि आपको पिन पॉइंट हो जाए कि ये इसके मेन प्राइमरी कीवर्ड्स हैं. देन व्हेन द टेप प्लेस, लिसन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो स्टेटमेंट्स मैच करते जाएंगे, तो बेसिकली आपकी वोकैब मैच बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है. और वोकैब मैच इंप्रूव करने के लिए ऑब्वियसली आंसर्स के बाद, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, यू हैव टू पॉज द टेप ओवर एंड ओवर, listen to the words, listen to the structure, and then improve the vocab from there. हाँ जी, you all said? ठीक है.